Consider again expansion 1 plus x power n. Put now x is equal to minus 1. So what is LHS? That is 0, and RHS is NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3 plus NC4 minus dot 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 like this. The last term will be followed by either plus sign or minus sign, which depends on value of n. अगर n का वैल्यू ऑड होगा तो लास्ट टर्म के आगे साइन क्या आएगा? माइनस. और अगर n का वैल्यू इवन होगा तो लास्ट टर्म के आगे साइन क्या आएगा? प्लस. नाउ लेट्स टेक ऑल दिस माइनस टर्म्स ऑन LHS. सो वी हैव NC1 plus NC3 plus NC5 dot dot dot. This is equal to NC0 plus NC2 plus NC4 dot dot dot. This means sum of odd binomial coefficients is equal to sum of even binomial coefficients. In fact, these are coefficients of odd powers of x and these are coefficients of even power of x. और इन दोनों का सम इक्वल होगा. सपोज इसको हम p एज्यूम कर लेते हैं तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? p. नाउ व्हाट इज सम ऑफ दिस टू? इफ वी एड p plus p, then sum of this two will be NC0 plus NC1 plus NC2 up to NCn. What is sum of this series? We have already seen this sum is 2 power n. This means p is equal to 2 power n minus 1. Hence, in this each side is equal to 2 power n minus 1. इसका मतलब sum of odd binomial coefficients and sum of even binomial coefficient equal होगा और हर एक का वैल्यू क्या होगा? 2 पावर n माइनस 1. ये पूरा एक्सपांशन जो है उसका वैल्यू क्या होता है? 2 पावर n. तो इन दोनों का जो सम है वो क्या होगा? हाफ ऑफ फुल एक्सपांशन, दैट इज 2 पावर n माइनस 1. फॉर एग्जाम्पल, वी नो दैट n minus 1c0, n minus 1c1, 2, n minus 1cn minus 1. What is sum of this? That is 2 power n minus 1. Then what will be n minus 1c0, n minus 1c2, n minus 1c4 dot dot dot. क्या होगा इसका सम? That will be half of this. इसका हाफ क्या हो जाएगा? 2 power n minus 1 by 2, that is 2 power n minus 2. Also, we seen that NC0 minus NC1 plus NC2 minus NC3 plus dot 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 minus 1 power n NCn. What this sum? This is 0. How we get this? When we put x is equal to minus 1 in 1 plus x power n. Or this is equal to expansion 1 minus 1 power n. So if we have n minus 1c0 minus n minus 1c1 plus n minus 1c2 minus n minus 1c3 plus dot dot dot, what will be this sum? Or let's terminate this series at minus 1 power n minus 1 into n minus 1 cn minus 1. What will be this sum? 0, because this represents expansion of 1 minus 1 power n minus 1. So if we have complete series with alternative sign plus minus, the sum of that series is always 0, whatever be the index, but the series must be full.
फुल सीरीज का यहाँ पे मतलब क्या है, स्टार्ट कहां से होना चाहिए, 0 से, और टर्मिनेट कहां पे होना चाहिए, जब प्रीफिक्स एंड सफिक्स इक्वल हो जाएगा।